कैमरा पूरा चेंज हो चुका है। जस्ट सेकंड। यो, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। क्या हाल, कैसे हो? हम्म। एलेक्स भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। दीपांकर शिंदे, वेलकम टू द स्ट्रीम। हाय ब्रो, क्या हाल, कैसे हो? वंश भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल है गाइस, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? बस 2 मिनट में स्ट्रीम चालू करते हैं। गेम अपना अपडेट हो रहा है, 1 मिनट और दिखा रहा है, इसके बाद फाइनल इंटीग्रेशन होगा। तो हाँ, मतलब 2-3 मिनट लगेगी गेम चालू होने में। इरफान भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। हाय भाई, क्या हाल, कैसे हो? और भाई भाई आजकल गायब हो रखे हो बिल्कुल। हम्म, 12 सेकेंड। जल्दी हो जा अपडेट यार। 5, 4, 3, 2। नहीं, वेरीफाई के लिए 5 मिनट बता रहा भाई अभी ये। कितने लगेगी? क्या यार, एसएसडी है यार, फुल स्पीड में होना चाहिए। कहाँ से हो भाई? इंदौर से? आप कहाँ? कोमल चाह, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल, कैसी हो? गुड नाइट एलेक्स। ओके। गए क्या एलेक्स भाई? सर रिक्वेस्ट करो। एक दिन में पॉसिबल नहीं है, जो मैं पिछले 2 साल में नहीं कर पाया। तुम क्या सोच रहे हो एक दिन में हो जाएगा? मतलब 2 साल से तो खेल ही रहा हूँ मैं ये गेम शायद। क्या होगा? ढाई मिनट और। बहुत ज्यादा टाइम लगा है वेरिफिकेशन में। 700-800 एमबीपीएस की स्पीड पे चल रहा है वेरिफिकेशन जितनी। एसएसडी होने के मतलब इतने खास फायदे हैं। सुपर स्पीड एसएसडी चाहिए इसके लिए फिर तो। फ्री में 2 साल की मजदूरी की है, उसके पैसे निकालो। शायद निकाल चुका हूँ मैं, ऑलरेडी दे चुका हूँ। याद करो। एक दिन तुमने खुश होके बोला था कि इसके बदले में। अब भी 2 मिनट दिखा रहा है यार, कुछ जल्दी समझा। रिफ्रेशिंग सब सही है। चालू हो जाए 1.5 मिनट। अच्छा, पोकेमोन कौन सा? हाय। ये कौन सा कैरेक्टर आ गया सिंह के साथ? पूछो सिंह। पंख। ये कोई नया कैरेक्टर आया है। वर्जन लूना 3। में कुछ होगा, ये होगा। एक की आंखों पे सफेद पट्टी टाइप की बनी हुई है, अजीब सी। रूबेडो ऑफ व्हाइट स्टोन बॉर्न। डोडिन। डोडिन नाम है। डरिन। डरिन। हम्म। मेरे भाई 10 सेकंड के लिए मैनेजिंग मत देना जरा। क्या करना है?
वो एक रियल ड्रैगन है, क्या बात कर रही है सही में? मैनेजिंग मोड का क्या फायदा, क्या करोगे? मुझे ये नहीं पता मैनेजिंग मोड और नॉर्मल स्टैंडर्ड अपने मोड में क्या डिफरेंस है। कभी ध्यान ही नहीं दिया। 17 सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए, फिर गेम चालू। कितने सालों बाद खेलूं ये गेम। दरिंदा डरिन है, दरिंदा डरिन। लड़का है क्या? दिख तो फिर इसमें सारे कैरेक्टर लड़के लड़की में पता ही नहीं चलता डिफरेंस। ओके लड़का है। कितना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये अपने भी जंग जैसे। ओके, ये भी ठीक है। अपन इस स्टोरी में बहुत पीछे रह गए। करना पड़ेगा। गेम चालू। अरे मैं भूल ही गया, ओबीएस में भी तो सेटिंग करनी पड़ेगी इसके लिए मुझे। पहले तो लॉगिन देखना पड़ेगा मेरे को। एक मिनट को। गेम्स। गेम साउंड। ओके। मैनेजिंग मोड नॉर्मल मोड को टाइम ऑफ दे सकता है, ओके। तो कोमल के पास कौन सा मोड है? एक सेकेंड। मैं भी दे सकता हूँ उसको टाइम ऑफ। पर ये नहीं देख पा रहा कौन सा। फैन है गेंशिन में, छोटे हाइट वाले सब। नहीं। और भी है। बड़ी हाइट वाले भी हैं। वो बर्फ के मुक्के वाला कौन सा कैरेक्टर था, वो जेलर। ओए, ये कोई आज अचानक से रात को कैसे? बस। कल भी तो नहीं, कल अच्छा स्ट्रीम नहीं की थी। अब से रात को ही होगी, दिन की स्ट्रीम बंद है अपनी। मैं आया, एक सेकंड गाइस। ओके, वापिस आ चुके हैं अपन। कहाँ थे? क्यों? आज अचानक से रात को कैसे? बस रात की स्ट्रीम करेंगे, अब से दिन की बंद है अपनी, दिन की परमिशन चली गई फोन खराब होने से। कोमल का फेवरेट होगा डोरेन। नो। फिर उसका क्या होगा, क्या नाम था वो पानी वाला तलवार वाला है? क्या नाम था यार उसका? वो सफेद बर्फ वाली वो छोटी सी लड़की का भाई था ना एक। नाम भूल गया है। पर सीरियसली। नाइस। वंश भाई आपका क्या सीन है, आप आ पाओगे रात में? दिन में क्या सीन है? दिन में तो वैसे भी नहीं आ पा रहे। रात में आ पाओगे? क्योंकि हम लोग अभी परसों हाँ परसों हम लोग वो खेल रहे थे माइनक्राफ्ट। प्ले स्टाइल में क्या रखा है, कैरेक्टर से मतलब होना चाहिए, बात तो सही है।
तुम कलम बिना पिक लगाओ, वो ज्यादा सूट करेगा पर्सनैलिटी वाइज। आयाटो, हाँ आयाटो, उसका नाम भूल गया मैं। आयाटो तो बस निकलता, निकला था नहीं क्या? ये माय हस्बैंड, वाह। चलो अपना तो हो गया है शायद से। नहीं हुआ है। एक सेकेंड रुकना। हम्म, हम्म, किस कर रहा है? गेम कैप्चर नहीं कर रहा। कर ले गेम कैप्चर। ये गेम कैप्चर क्यों नहीं कर रहा मेरा? वाई? इसको क्या दिक्कत हो गई? एक मिनट, जस्ट चैटिंग पे लगा देता हूँ। इसी, टू सी टू होने वाला है, क्या बात है। चलो मैंने इसको पास में खसकाते ज्यादा दिन बोले। हाँ, लेट नाइट स्ट्रीम करके क्वेस्ट करना जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे। अच्छा, ये परमिशन मांग रहा है इधर, फिर भी कौन हो रहा है? कौन सा अकाउंट में था अपन? मुझे भी हुई है। दुनिया, कितने महीनों सालों बाद खेल रहा हूँ यार ये गेम में। मेरा अकाउंट ही भूल गया कौन सा था। जब कल मैंने फर्स्ट टाइम मिले तो उसमें ये सुना, ये कैरेक्टर जिसको जल्दी कुछ समझ नहीं आता। to authorize my authorize successful, yay। यूजर गूगल, ठीक है। हो जाए यार, ऐसा मेरे साथ धोखा मत कर। विंडो कैप्चर, ऑटोमेटिक गेम कैप्चर, एप्रिशिएट। गेम कैप्चर तो कर ही नहीं रहा ना, वो तो दिक्कत हो रही है। May require OBS to be run as administrator to use game capture. Why? ऐसा क्यों है? ये चीज हमको पहले बोलते, स्ट्रीम चालू करने से पहले। मेरे को स्ट्रीम क्रैश करके दोबारा चालू करनी पड़ेगी। मेरा कंफर्म है, वेरी साथ के साथ चीज आती है वैसे। ओके, गेम स्क्रीन नहीं आ रही, वही तो दिक्कत आ रही है। गेम कैप्चर कर ही नहीं रहा। वो बोल रहा है गेंशिन इम्पैक्ट में रिक्वायर ओबीएस टू बी रन एज एडमिन।
एडमिन ही तो चल रहा है। What's wrong? Let's see। गेम एक बार ओबीएस को पूरा बंद करके चालू करता हूँ, मैं भी शायद हो जाए। पहले यहाँ से सेटिंग्स देख लूंगी कि स्ट्रीम क्लोज नहीं हो जाए, पता चला स्ट्रीम ही रही। ऑटो स्टॉप बंद है, ठीक है इसका तो। और इसका ऑटो स्टॉप बंद है, ठीक है। हम्म, सब तो चल गया। चल गया फाइनली। ये इसको क्या दिक्कत होगी? ठीक है। हम्म, हो गया सही। इधर भी सही। लेट्स डू। फाइनली। अब बस ये ना हो कि मैंने गलत अकाउंट लॉग इन कर दिया। लोकेशन से हम जस्ट सेइंग गेंशिन एंड ओबीएस दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस। ओके। वो तो ओबीएस करने से हो गया, गेंशिन तो पहले से ही रन हो रहा था। Coming on, I don't think she'll work without going to like someone get tickets on her. Whatever. व्हाइट हाउस है ना? ये मेरे ही अकाउंट है ना? सिंक्यू है अपने पास, काजुआ है, बेनेट है, आले चिनो है। तो कंट्रोल्स भी भूल गया इसके सारे। हमारे डेलीज नहीं हुए अभी तक। आइए। 1 2 3 F1 से होता है ये, F2 से होता है ये, F3 से होता है विश। जहाँ तक बची ही है 268। नाइस। उम्मीद नहीं थी मुझे, इतनी हिस्ट्री देखी। कुछ तो निकाला था इसमें, यूजर ने पूछता नहीं है। इसकी भी सही होगी ऑफ कोर्स। अच्छा, इसने इस पे निकाली थी history। मैंने फिनिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं निकाला। वेपन पे यस, तो हम लोगों के नहीं की गए एशियन में क्या कौन सी पिक्स आ जाता है। एशियन 41 एनिमीज। मैं अभी टोटली अनअवेयर हूँ इस गेम में चल क्या रहा है। मेरे को तो ये भी नहीं पता मेरे कैरेक्टर्स का, मैं बिल्ड क्या है, मेरे कैरेक्टर्स के बिल्ड ही भूल गया मैं तो सब। आर्लेचिनो, बेनेट। Oh, ow. स्ट्रीम पे सब सही तो दिख रहा है ना पहले? चेक कर में आपको पता चला। या ओके। साउंड वाउंड सब सही है, गेम साउंड आ रहा है। हाँ ना, बच गया।
अर्ली बिल्ड फेस कैम। फेस कैम नहीं है। हाँ कुछ तो भूल रहा था मैं। ठीक है। अर्ली बिल्ड का क्या? मेरे को खुद नहीं पता मेरा अर्ली बिल्ड क्या है अभी। सालों बाद देख रहा हूँ। 61 to 33, 111, 46.6। Okay, not bad. White diesel, 911, C0, Gladiator Finale 40s। मेरे पास आर्टिफैक्ट्स बचे हैं, एक सेकंड। सारे गायब हो रखे हैं ना आर्टिफैक्ट्स। टोटल गायब है सब। नहीं गए, बचे बचे। दूसरी जगह पे है। बैग में लिखेंगे असली आर्टिफैक्ट्स अपने। ये क्या चीज आ गई? ये कुछ पहली बार नहीं था। ये तो खजाना भरा पड़ा है। करेंगे अपन रोल करेंगे आर्टिफैक्ट्स पे। देखते हैं अपनी किस्मत। लॉक असिस्टेंस क्या है ये? व्हाट इज लॉक असिस्टेंस? नहीं करना। ये डिलीट कर दो, क्या डिलीट करना है? ओके। कौन से क्वेस्ट करें पहले? आर्कन क्वेस्ट, वर्ल्ड क्वेस्ट, जैसा आता था ना। हाँ। मिशन क्वेस्ट नहीं करेंगे हम, पहले आर्कन क्वेस्ट कर लेते हैं। मैं कुछ नहीं करना। E और Q, No, my sword! बीस नेविगेशन। किससे बात करने में? Body and mind. ज्यादा से नहीं करनी है। देखो, इस पे थोड़ी आना था हमें। इस पे जाना था। नेविगेट इसको किया मैंने। डेढ़ इयर्स की कौन बाकी है? लेट्स कंटिन्यू स्पेशल। तो मैं, हाँ 1.5 साल हो गया ना मेरे को खेले हुए ये गेम, ज्यादा ही हो गया। Wow! The city is all decked out! Oh, it's beautiful! इसकी आवाज बढ़ो थोड़ी है। Festival season means no commissions, which means no Mora. But Catherine's always looking out for us, so we should still drop by and say hello.
बुड्ढे होते जा रहे हो। शू प्लेज वेलकम टू द स्ट्रीम। तुम कहाँ गायब हो? Greetings, traveler. Paimon. Hey, Catherine! Still doing the whole no commissions during Windbloom thing? In general, yes. The people of Mondstadt don't delegate their work to others this time of year. But But... feel free to take a look around. I think you'll pick up on something unusual. Take a look around, huh? It's finally Windbloom. And here I am ruining everything. You're a bit tired. No big deal. Give it some time. How about doing something fun tonight? We could take a stroll or go stargazing. Stargazing? Like we'll find a spot. You know people start reserving places on Star Snatch Cliff the moment the sun goes down. Sorry, I'm just not in the mood. I should go. वीडियो वाला प्लस ट्रिगर कर दिया लो, ये भी ठीक है। देखो ढूंढ के, कहाँ ढूंढूं? कौन सा क्वेस्ट कर रहे? पता नहीं। तुम खेलती हो? आर्कॉन क्वेस्ट है वैसे कोई सा तो। मैंने अभी तक ये अल्बिडो का क्वेस्ट नहीं करा। ओके। क्यों इतना बोरिंग है क्या? इनका मैटर सॉर्ट कब होगा? भावत भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल है, कैसे हो? नाइस। नाइट स्ट्रीम नाइस। ये अब से नाइट ही होगी। बस कह नहीं सकते कौन सी गेम की होगी, पर डेली नाइट में होगी। कभी ज्यादातर बीजीएमआई, फिर आफ्टरवर्ड सेकंड गेम कोई सा जीटीए, गेंशिन, या कोई भी ट्रिपल ए गेम। मतलब 2-3 घंटे बीजीएमआई रात को 12-1 बजे तक, उसके बाद थोड़ा 1-2 घंटे दूसरा गेम। जारी भाई मैं क्यों? क्या हो गया? भाई तुमने तो ये गेम खेलना छोड़ दिया था ना? जहाँ तक मुझे याद है बहुत पहले, मेरे से पहले छोड़ दिया था। सही में? जब क्यों तब भी नहीं होंगी, ये भी ठीक है, पर क्यों? बीजीएमआई खेलोगी साथ में? रात में करूंगा मैं स्ट्रीम। लाइक 9:30 से 12 बीजीएमआई रहेगा मोस्टली, ज्यादातर। पर अभी नहीं। अभी तो क्या सीन हुआ है कि मेरा फोन डेड हो चुका है, पूरा खत्म, जिसमें खेलता था। एंड इसको ठीक कराने का पैसा है ही नहीं मेरे पास। जब लूंगा, जब नया फोन देखेंगे। तो ना अभी फोन लेने का पैसा है, ना इसको ठीक कराने का पैसा है। टोटल डेड हो चुका है, इसलिए अभी बंद है कुछ दिन बीजीएमआई। उसके बाद फिर जब पैसा आ जाएंगे, जब नया फोन लेके फिर चालू करेंगे। शंभू माया ये भी ठीक है, करो करो। ये मैंने वो भी छोड़ दिया। तो करती क्या हो? सब तो छोड़ दिया। यार दिला दिया, डिलीट करना है मेरे को फोन से। है? बीजीएमआई डिलीट करना है? भाई मैं तो अच्छा फोन खरीदने की सोचा था, 120 FPS वाला। मेरे फोन में इन लोगों ने बहुत महंगा खर्चा बता दिया यार। आईसी डेड बोल के बोले 20,000 कुछ की आईसी आएगी, और 2,500 कुछ की बैटरी। तो बहुत ज्यादा महंगा है। मैं सोचा दूसरा फोन ले लेते हैं, पर उसका भी पैसा नहीं है अभी। पीडी डायरेक्ट न्यू आइकॉन पेस्ट करो, तो ये कौन सा कर रहा हूँ मैं? डायरेक्ट न्यू नहीं है ये। लूसीफर शेडो भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल है भाई, कैसे हो? हाउ आर यू? बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीम पर। स्ट्रीम को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर देना ब्रो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते अपन आगे स्टोरी में। Whoa! Something's off with Beatrice. She would never give up a chance to talk to Quinn. This is weird. Oh, you're leaving? I can walk you home. No, it's okay. Thank you. I just need some time to myself. Besides, there's still something I need to do. The truth is, Quinn, not long ago, मेरे को गिफ्ट करने वाले थे ना 4 साल से, कह रहे हो क्या गिफ्ट करना था? बेशरम इंसान, थैंक यू। इतनी तारीफ क्यों हो रही है मेरी आज?
थैंक यू। स्टिल आती हूँ बाद में, काम है थोड़ा। ओके, मैं समझ रहा हूँ सब। एंजॉय। मिलते हैं थोड़ी देर के ब्रेक के बाद। वीडी बस बीजीएमआई के लिए न्यू फोन मत लो तो फिर काय के लिए लूं? ये फिर काय के लिए लूं? ऐसी मेरा भी डेथ हुआ, 2K खर्चा आया था बस। है कौन सा फोन था? मेरे को तो 20,000 का खर्चा बताया है। फिर मेरा फोन भी खरीदा जब 72,000 का था, तो उस हिसाब से रेशियो सही है। कोमल, इनको ज्ञान दे के फायदा नहीं है, गेम ही बंद करवा दो इनका बेस्ट। अकाउंट रिव्यू। सॉरी ब्रो, मैं खुद नूब हूँ। आज मैं करीब 1.5-2 साल बाद ये गेम वापस खेल रहा हूँ। मुझे इस गेम के बारे में अब कुछ भी नहीं पता है। आई एम टोटली न्यू टू दिस गेम अगेन। सब भूल चुके हम। पीड़ी पागल है, थैंक यू। वही मैं सोच रहा हूँ आज इतनी तारीफ क्यों की जा रही है मेरी स्ट्रीम पर? ऐसा क्या है आज सब तारीफ करने में लगे? कोई मेरे को बेशरम बोल रहा है, कोई पागल बोल रहा है। व्हाट्स द ओकेजन? अरे भाई, आप लूडो खेलो, बेस्ट रहेगा, है ना? नहीं यार, ठीक है, लूडो मतलब बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल का है, पर इतना दिमाग लगाना पड़ता है ना उसमें, है नहीं अपने पास। What is it? Is there something wrong? Never mind. It's nothing. Actually, Quinn, I think we should stop seeing each other for now. Huh? Wait, are you saying we can't be friends anymore? I thought we were best friends. Did you see that? Beatrice ran off without looking back. Oh, we go adventuring in other nations for a bit, and one of Mondstadt's best friendship stories is already over? कुछ तो गड़बड़ हुई है इनकी, क्या हुआ है? वीडी भाई भालू हो है? ये भी ठीक है। और रियल का भाई, ऐसा क्या बोला कवाई ने? पागल है, उनको वापस। ठीक है। So, is this what you meant by unusual, Catherine? This is just one example. Beatrice has been feeling down for days. But that's not all. Oh, it's the honorary knight in Paimon. Is something wrong? You don't look so good. मॉन्स्टर पूरा डिप्रेशन में चला गया भाई, मैंने खेलना बंद किया तो। ये क्या सीन है? I know a knight should be stronger than this, but I haven't been feeling right lately. I just can't focus. गाइस, जो जो भी स्ट्रीम देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीम पर। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना यार। I started sleepwalking out of nowhere. Sometimes I'd even wake up in the middle of the night standing in a random location outside. You should see a doctor. I did, but all the tests came back normal. The doctor said I'm fine. Yeah, I even consulted Miss Barbara at the church, but her conclusion was the same. In any case, she was kind enough to pray to Lord Barbados for me to get better. फिर दिल से खेलो, उसमें दिमाग नहीं यूज करना होता। वो गेम खेलना पसंद नहीं है भाई अपने को। वो गेम अपन जैसे लोगों के लिए नहीं बना। न्यू ईयर का प्लान बताओ जल्दी। स्ट्रीमिंग करेंगे अपन, और क्या? ये अपन अपना लैपटॉप, अपन जिंदाबाद। मच्छर काट रहे, तुम मच्छर को काट लो। बहुत ज्यादा खांसी हो रखी है मेरे को, रुको कब सिरप ले लूं। Is it... Is it because I saw something I wasn't meant to see? डीसी बीसी आना है क्या? आ रही हो क्या? छी, काय का? क्यों? क्या? कैसे? राधा वगैरह कहाँ है? आई हैव नो आइडिया सर, टोटली सब गायब है। ड्रैकुला से भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उसको भी इंस्टा पे मैसेज नहीं जा रहा।
राधा का तो आई हैव नो आइडिया कहाँ है क्या है। बाकी किसी का भी कुछ भी नहीं पता। हाँ, अंश भाई और फॉक्स भाई आते रहते हैं कभी कभी स्ट्रीम पे, महीने में एक आध बार। और मेरे यहाँ इतनी अच्छा ठंड से मर गए, वाह। ये कुछ होता तो बुलाना, ये कुछ होता तो बुलाना। हम किस दिन बच गए, ऑलरेडी हूँ इसी पे, किसके का। हाँ, वो तो मैं समझ गया था, तुमने बोला थोड़ी देर में आती हूँ तो मैं करूँ, मेरे को तो दे ही देगा रिप्लाई, करो करो। मेरा तो मैसेज ही डिलीवर नहीं हुआ, रिप्लाई करना तो छोड़ो, मैसेज ही नहीं पहुंचा सामने वाले तक। उस पर आ रहा यू कांट मैसेज ऐसे करके, उसको भी आ रहा था। मैं अच्छा नहीं हूं ना, ये भी ठीक है। Sorry, this is for me to figure out. It is Windbloom after all. Anyway, I have patrol to finish. Until next time, you two. Huh. Is it something in the air, maybe? It appears Miss Donna is also out of sorts. नहीं बताऊंगी, मैं समझ रहा हूँ, बिना बताए समझ रहा हूँ। तुम परी हो, मच्छर नहीं। लेक्स भाई परी है। अगली बार से ऐसे परी बोल के वेलकम करना पड़ेगा स्ट्रीम पे। सर आपको ये मिले, क्या हो, किसने, कैसे, क्या। Oh, where can I find a truly fascinating man? Wait, but Donna is the one who has a huge crush on D-Luke, right? That's what I thought too. But she seems to have changed her mind. सही समझ रहे हो, मैं कुछ नहीं समझ रहा। Hmm, is that Captain Kaya? Huh. Now that I look at him, he's exactly my type. How come I never felt this way before? I'm flattered, Miss Donna. Although, I do wonder whether that was intended for outside ears. Oh, no. Of course not. I'm sorry, Captain. Just pretend I didn't say anything. And, have a happy Windbloom. पैनल का भरता, वाह। दिमाग स्लो होता जा रहा है आपका। मेरा दिमाग एंड हो चुका है। मैं आती बाद में। ओके, मेरे को बताना हुआ क्या है, जब भी वीसी वगैरह पे कभी बताना, डीसी वीसी। I intend to, my dear. But first, a question, if you don't mind. Why the sudden change of heart? I was under the impression Master Diluc was the object of your affections. Good question, Kaya. So, you knew about that? Well, Master Diluc came into the city not too long ago, but when I saw him, it was like the butterflies just weren't there anymore. If I had to compare it to something, it would be like waking up and realizing you're married to a man you don't love. But then I saw you, and it wasn't that something was different about you. I can't really explain it. It was just a feeling. शाम के टाइम पिंग करना, मैं आ जाऊंगी रिसीव। ओके, कहाँ पे कैसे पिंग करना है, एक मैसेज कर दो ना मेरे को, किस पे मैसेज करना है या किस पे पिंग करना है। एक हाय या कुछ भेज दो कहीं से। यार मेरे को कौन सर पहले ऐसे ही बोल दिया, तब से परी परी लगा। उसकी मेमोरी बहुत सही है, वो कोई भी चीज ऐसी भूलती नहीं है। सही करा है ना एक्टिविटी के। काया को प्रपोजल आया, लेट्स गो, ये। I understand. And I'm flattered I was able to bring back the butterflies. But I do need to see to some business, so I'll take my leave. आपके सर्वर पे करना, किस नाम से हो, इसी नाम से, श्रू प्लेस के नाम से, क्योंकि मेरे को इसमें मेरे सर्वर पे कोई नहीं दिखता। श्रुति वाली आईडी से है। ओके, श्रुति नाम से कोई है सर्वर में। तुमने शायद सर्वर लीव कर दिया था जहां तक मुझे पता है।
Here he comes. Well, surprised to see us? Not at all. You are the exact two people I've been trying to find. So, Traveler, Paimon, how have you been? The answer to that requires a private conversation. Catherine, do you mind? Not at all. Have fun, you three. So, you said you were looking for us. Yes. Jean sent me to find you when she heard you were back in Mondstadt. But let's discuss the finer details back at headquarters. चलो तो मैं भाव ही नहीं कर। चीचा क्वेस्ट करो ना, कितना ब्रेक ले रहे हो? कहाँ ब्रेक लिया? क्वेस्ट ही तो चल रहा है, ये वहां जा बुलाया ना इसने। बड़ी भाई, शादी कब कर रहे हो? उम्र हो गई, निकल गई, बुढ़ापा आ गया, निकलनी। Ah, Kaya. You found them. नॉर्ड क्राई रीजन अनलॉक होने दो, फिर पीक क्वेस्ट शुरू होगी। ओके, तो अभी क्या ऐसे ही चल रही है टाइम पास वाली? Good. With what's about to happen, it's great to have you in town. Whoa, headquarters are packed. What's going on? Honorary Knight Paimon. Oh, it's an honor to meet you. I believe introductions are in order? Allow me. You have Note, captain of the second company, Skyron, captain of the third company, Eula, captain of the fourth company, and me, of course, captain of the ninth company. ये कंपनियां कब बनी थी सारी? Oh, you're all captains? वीडी भाई, टुनटुन मौसी से कर लो शादी। कौन है ये? That's right. Master Jean is waiting for you inside. She'll explain everything. Jean! जीन की आवाज गायब हो गई। शादी नहीं करने तो अकेले आदमी को नहीं मिलता है, लेडीज को तो फिर भी मिल जाता है, आदमी को नहीं मिलता। A trial? But this is Mondstadt, not Fontaine. Which means it's a serious one. So, do you need our help? टुनटुन मौसी छोटा भीम वाली जो लड्डू बनाती थी। मैं छोटा भीम कभी नहीं देखा, सिर्फ नाम सुना। एक शादी कर लो, फिर उससे क्या होगा? मेरा क्या फायदा? बेटा नुकसान ही है, बाद में एलिमनी मांग ली तो? कर लो शादी पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, वेरी हैप्पी। मैं
अपनी हैप्पीनेस को रिस्क में कभी नहीं डालूंगा। Right! He's the captain of the investigation team! But we didn't see him out there! Albedo is the one on trial? What did he do? Jean, it's time. Oh, that's a new face! Deacon of the church. Does that mean he works with Barbara and... मेरा भी शादी करने का कोई प्लान नहीं, अकेले जीऊंगा। वाह, दिमाग वाले निकले आप भी। नॉट क्राई पीक है ये क्वेस्ट। नॉट क्राई पीक है ये क्वेस्ट, स्पीड रन करो। ओके, नॉट क्राई में सबकी वहीं से, तो इसमें क्यों गायब कर दी सबकी? Yes. Ready to proceed. Prior to this trial, the Knights of Favonius, in conjunction with the Church, launched an investigation into Mr. Albedo for suspected murder and unlawful disposal of human remains. Murder? A witness stated that, 11 days ago, in the middle of the night, she saw the defendant southeast of the city gates, dragging a large object she later identified as a human body. No. There's no way! गेंशिन वाले ने पेंगुस मुद्रण में पता नहीं था, वर्ल्ड क्वेस्ट में वॉइस ओवर नहीं डाला। डाला होगा उस समय के टाइम पे, पर वो अभी कुछ वॉइस एक्टर के साथ कुछ लीगल लफड़ा हो गया होगा तो हटा दिया होगा। हटाते रहते हैं बीच बीच में वॉइस ओवर। We now call that witness to the stand. Beatrice, please tell us what you saw. Well, I was out late that night on business. And when I came back, I saw someone in the moonlight that looked like Mr. Albedo. He was dragging a huge bag of some kind. I thought it was strange, so I followed him. Then, there was a sudden flash of golden light. The bag opened, and inside there was a body! Mr. Albedo's vision allows him to manipulate the ground with ease. So he buried it, and then removed any traces on the ground. Before he left, it seemed like he looked in my direction. Maybe it was just my imagination, but I was terrified thinking he might kill me too. Luckily, he didn't see me.
That's right. The next day, the defendant submitted his latest environmental report on the Dragonspine region. Considering the length of the text, it must have taken a considerable amount of time to finish. Can anyone attest to the fact that the defendant was working in his office that night? No. Then the length of the report is not a sufficient alibi. This isn't looking good. If the crime did occur as you described, then what about the body? You mentioned the joint investigation. Well, was the body recovered? Not yet. In other words, you dug up the location Miss Beatrice described and found nothing. You don't find that suspicious? I know what I saw. I'm telling the truth, Miss Hertha, I swear. Also, didn't you say that speaking out would help protect the people of Mondstadt? Otherwise, I'd never put myself out here like this. Let's go. So that I have a good night. Okay. You're doing the right thing. Besides, the investigation wasn't fruitless. A single men's shoe and a torn piece of fabric were found in the bushes near the crime scene. The same location the witness described. If no crime occurred, then is all this just a coincidence? And yet, no victim has been identified, correct? It's true. No one has been reported missing. However, Miss Beatrice harbors no ill will toward the defendant. Her testimony clearly points to a crime, and she has no reason to lie. मैं इसके अल्बर्टो की भी आवाज गायब कर दी इन लोगों ने तो. The defendant raises an important point. Motive. Yet, I must be frank, not all murders are premeditated. Spontaneous conflict can also have unforeseen consequences. Nevertheless, I don't intend to prosecute this case on circumstantial evidence alone. Which brings me to the second charge against Mr. Albedo. Second charge? 7 days ago, at dawn, a witness saw the defendant dispose of the body of an adult male in the area between Dragonspine and Dawn Winery. I now call the second witness to the stand. Wait, that's... मेरी डांस करके दिखाओ किस खुशी में क्यों why बाका. Please tell the court what you saw. At around 3:40 in the morning, I saw Mr. Albedo dispose of a body beneath a cliff. It was dark, but he used the power of Geo to illuminate his surroundings. From what I could tell, it looked like the body of an adult male. Tall and thin, but I couldn't make out the age. He buried the body underneath the cliff and smoothed out the ground to remove any traces. We now have accounts from two separate witnesses that describe the same modus operandi. Would you call that a coincidence? I would only inquire as to what Mr. D-Luke was doing in that area so early in the morning. Not the most opportune time for a stroll. अल्बर्टो की वॉइस नॉट क्राइम में आती है तो यहाँ क्यों नहीं है. यहाँ भी तो डालनी थी. यहाँ पे भी तो कैरेक्टर है ना. Is there such a thing? Dawn Winery is my home. It's not unusual for me to take walks in the area. I just happen to be in the right place at the right time. That's all. Master D-Luke is a well-respected figure in Mondstadt. I see no reason for him to frame Mr. Albedo. Yet, the question remains, where are the bodies? Before you suggest a lack of evidence, Mr. Kaya, you should know. After the defendant left that morning, the witness found this where the body was buried. And this is? What looks like the teeth and femur of a human. Now, it does beg the question. If the burial was fresh,
Why is this all that remains of the body? But I suppose Mr. Albedo is the only one who can answer that. सेवन कर रहे हैं ओके इंग्लिश वर्ड से ओके समझ गया Careful now, Master Diluc. I do believe I hear a presumption of guilt in there somewhere. These remains suggest an accelerated rate of decomposition. Considering the defendant's profession, there's reason to suspect that alchemy is at play here. Both witnesses saw golden light, a known byproduct of alchemy. That's how the defendant destroyed the bodies. The light also explains how the witnesses were able to get a clear view of the events in the dark. A logical assessment, but we have a witness of our own. The afternoon before the alleged second murder, Mr. Albedo had a lengthy intellectual exchange with his student, Sucrose. The two were in the library until the next morning. Miss Sucrose was presenting the results of her research. She noticed some flaws in the data and insisted on reviewing her calculations until the next morning, with Mr. Albedo present. तो फिर उसकी भी आवाज गायब कर दी इन लोगों ने You're certain Mr. Albedo was present the whole time? Nevertheless, the other witnesses have no reason to lie. Tell me, Miss Sucrose, that meeting in the library, were you awake the whole time? Sounds like a considerable duration to go without sleep. I do hope you can be truthful with us. It concerns the safety of countless Mondstadt citizens. A crime like this cannot go unpunished. No conclusive evidence of guilt. But the witness accounts do match to an extent that can't be dismissed. This is a tricky one. Allow me to submit another piece of evidence. The investigators intercepted one of Mr. Albedo's correspondences. I will now read the pertinent parts to the court. I have never abandoned the subject of human research. In fact, delving deeper into Dragonspine has led me to realize that the concept of life could be further expanded and transformed into that of birth. The mystery of human birth is often linked to death. As such, death is the most suitable material for the creation of new life. To that end, we must engage in a process of putrefaction and refinement. Is that in reference to an alchemical process? The letter continues. Experimental trials have been carried out in the northwestern part of Dragonspine, in the area southeast of Mondstadt's main gate. The data is just as you endeavored to do, I too shall take up the path of creation and break through current limitations to reach a new realm of living beings. कलम बिना ओ जी ये क्या नाम रख लिया ये भी ठीक है कितनी बार नाम चेंज करती हो Correct. Not to mention, the locations indicated in the letter match both crime scenes.
What more can we trust than the defendant's own words? No, it can't be true. A guilty verdict cannot be delivered without sufficient evidence. In order to protect all parties involved, that is what our principles demand. My original assessment was that we lacked said evidence. But now, it seems the only remaining questions are the identities of the victims and the specific alchemical process used in this case. अनलिमिटेड टाइम क्यों इतना वेस्टेज? मेरे को लगा लिमिट होती है, महीने में एक या दो बार ही कर सकते हैं नेम चेंज। Why would Albedo do something like that? Oh, this has to be a nightmare. वीडी चैट मत देखो, स्टोरी पर फोकस करो। ओके। Rosaria! Oh, when did you get here? इसकी भी आवाज नहीं है। Who is he? बहुत दूर है, हम टेलीपोर्ट करना चाहेंगे। Traveler, Paimon! I could hear your arrival upon the wind. Were you looking for me? Venti, did you send us that message? No, I did. ये कौन है? पहली बार देख इसको। Whoa, where did you come from? Wait, Venti, do you know this guy? His name is, what is his name again? विशाल भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। यो, क्या हाल है? स्ट्रीम को लाइक कर देना भाई। आज नहीं करी आपने भी स्ट्रीम पे? 5-6 दिन हो गए यार आपको तो स्ट्रीम किए। Didn't think I was that unmemorable. I'm Dahlia, Deacon of the Church of Favonius and Herald of the Animo Archon Barbados. Not going to forget next time, right? That's right. I noticed you during the trial. The legendary honorary knight. You seem to have a lot of thoughts on your minds, so I thought we should have a chat. ओल्ड एज वाली फील आ रही, बस कुछ लोग गायब हैं। हाँ, अगर सारे लोग होते ना, मैं रेगुलर 6-7 दिन कर लेता गेंशिन की स्ट्रीम और कोशिश करता क्वेस्ट जल्दी जल्दी खत्म करने की। सब लोग है ही नहीं अभी। After all, I am the Herald of Barbados. If the people of Mondstadt are in danger, I should keep the Animo Archon in the loop.
आ जाओ वापस बीजीएमआई, तब करेंगे स्ट्रीम। क्यों, दूसरे गेम्स भी कर सकते हैं, माइनक्राफ्ट वगैरह। आओ आप रात में। अब देखो मेरा तो डेली रात का ही है, दिन की परमिशन पूरी गई मेरी। 9:30 से 10 के बीच में मैं मतलब स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड वही 1-2 बजे तक। दिन में मेरे को काम करना पड़ेगा। खैर हाँ, मैं फोन लेने का तो सोच रहा हूँ अभी। लेट्स होप अच्छा ही फोन लूंगा। IQ 15 का बजट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अभी आधा पड़ा है, आधा और अरेंज करना है। Wait then. You know about. About what? The fact that my tavern hopping nomad of a friend is Barbados himself? Don't worry, Dahlia and I are close. He knows everything. इस दुनिया में कुछ परमानेंट नहीं होता। बात तो तुमने बहुत डीप बोली है, पर ये किस वजह से बोली है? Besides, a god needs someone to communicate their will in a formal setting, and no one does that better than Dahlia. अगर तुम व्यूअर्स की बात कर रही हो तो आई नो, मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए ना। 2021 से 25 दिसंबर आ गया। हाँ, 21 दिसंबर 2021 से चालू की थी मैंने। 9 दिन बाद पूरे 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं मेरे को स्ट्रीम करते हुए। और मतलब यूं मानो हर साल इतने लोग आए, इतने लोग गायब हुए लाइफ से, स्ट्रीम से। मतलब बहुतों से तो दोस्ती हो गई, फिर चले गए, फिर गायब ही हो गए सब। ओल्ड डेज आर गॉन, कुछ नहीं कर सकते। जो है आज उनके साथ एंजॉय करो। यही जीवन है। ऑनलाइन दुनिया में भी यही है, रियल लाइफ में भी यही है। Not that I saw that coming when we first met. But back to the matter at hand. I believe you two already know about Albedo's background. So, you know too, Venti? That's surprisingly Archon-like of you. Ah, well, I knew from the moment Daughter and Alice brought Albedo to Mondstadt. When those two are in town, no one can afford to slack off. नहीं भाई, कवाई तुम्हारे लिए था ये। The Kryda Prince, a perfect specimen of synthetic life. At this stage of the case, there are countless questions surrounding Albedo's motive. His true identity is a potential weakness. A synthetic being loses control of their sanity and goes on a killing spree. That's how a novel would frame the story, and people are inclined to agree. Albedo has told us before that humans often value the ordinary over the transcendent and miraculous. And the slightest difference is perceived as other. A very common phenomenon. Which means we need to find a way to help your friend. Me? Well, I know that Albedo is a synthetic being, and that a lot of strange things have been happening in Mondstadt, even though Windbloom should be about drinking and having fun. मैं 1 सेकंड आया, वॉशरूम ब्रेक।
भयंकर ठंड पड़ रही है यार। पता नहीं। चलो। पहले 100% फैन बॉय लगता है। फैन बॉय होता क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता। अपना सर दीवार पर कुछ डायलॉग से ऐसे तो no comments. अपने कैट को हक करके सो जाओ कैट। सही है बहुत भाई यो वेलकम बैक। क्या हाल है? अरे वीडी भाई आप यार अपन तो यही थे यार हमेशा से। आप कहाँ हो? We noticed that too! The minute we got here, something was off. I've picked up on most of those too. Miles is out of sorts. Beatrice seems anxious. Although I didn't know Donna stopped being interested in Master Diluc. When no love remains for the songs to tell, the world becomes naught but an empty shell. Cruel is said fate, cruel it may be, were it not for a hero who could set us all free. What are you getting at, Tone Deaf Bard? Oh, just making a comment. There are always unavoidable trials in life. At least, that's what Barbados would say. A certain someone is going to need to overcome a trial like that. In such cases, even the Seven know better than to tamper with fate. If only there was a brave soul willing to aid their friend in his time of need. Should he meet a terrible fate, all of Mondstadt could be worse for it. If you wanted our help, you could have just asked, you know. वो बुक पढ़ रहा था कौन सी? अब बुक पढ़ते हो? जनरली मैंने बहुत कम लड़कों को देखा है कोई बुक पढ़ते हुए। लड़कियां जन पढ़ती रहती पर लड़के तो बहुत कम पढ़ते हैं। Well, even if Albedo wasn't at the center of this case, protecting Mondstadt is part of being an honorary knight, right? एवं सेम टाइम में फनी है और अलाइन भी। अलाइन फनी फनी जरूर लगती है। You'll still have help, of course, which is why I prepared a little surprise. Behold! A bomb! Don't worry, I removed the fuse, so it's not going to explode. Say hello to the Dodo communication device. मुझे वो छुटकी की याद आ गई। बम वाली। क्या नाम था उसका? छोटी सी बच्ची थी ना? So, this thing belongs to you now? We're old pals. Don't think she'd care if I borrowed it for a few days. Anyway, this invention, with a little help from a trick of mine, will allow us to keep in touch. Just take it out and we can chat. That's all I ask. No matter what comes, you have the wind on your side. क्ली हाँ क्ली। मैं तो कैरेक्टर्स के नाम भी भूल गया 1.5 साल में। मेरी टीम कैसे फाइट करती थी सब क्या होता था कुछ भी नहीं पता अब तो मुझे। क्या होगा मेरा? नॉट क्राई में क्ली की मॉम भी है क्या बात कर रही हो? सही है। पहले नहीं थी ना वो? उसको ढूंढने निकली थी वो बच्ची। Whoa! This is way too many books! Considering this library organizing job was classified as a premium commission, I'm on key mentally prepared, you know? मैप देखो नए रीजन का वो तो मैंने देखा ही नहीं। देखते हैं अभी। But seeing it in person,
Why, if it isn't Cutie and Paimon. What brings you back to Mondstadt? Let me guess. You missed me so much, you just had to come visit. Is that it? You've become quite the flatterer since we last saw each other, haven't you? अभी तक मीडिया ने न्यू रीजन अनलॉक नहीं किया। मैंने खुद नहीं देखा कि न्यू रीजन आया कहाँ है, कैसा क्या है। देखते हैं। Found you! We were starting to think you weren't clocking in today. Well, I wasn't planning to. But then, Catherine mentioned someone had finally accepted an important commission for the library. So I came to check on things. Might you both be here for that very commission by any chance? Ah, music to my ears. Now, as you can see, a certain anonymous benefactor has donated a large amount of books to us. Imagine my surprise when a glance down the book list revealed that each one would be an entirely new addition to our collection. There are books of all different kinds, including quite a few that are banned. Troublesome, I know. So this wasn't an odd job I could trust to just anyone. ट्रैवलर दिखाओ, मैंने खुद नहीं देखा अभी तक, कैसा है, देखते। And sorting them myself? My, what a headache that would be. It would take ages. All that to say, I'm very relieved to see you here. उस काम का है क्या वो? मेरे को यही नहीं पता था क्रायो ट्रैवलर भी आ गया। आप बोल रहे हो तो पता चल रहा है। मैं 1.5 साल से ऊपर हो गया मेरे को ये गेम ओपन किए। आज खेला है मैंने इतने सालों बाद। I would treat you to some tea, of course, but looking at the state of this place, perhaps another time, yes? क्रायो ट्रैवलर नहीं आया है, वो न्यू रीजन क्रायो नहीं है, न्यू रीजन है। ओके, ये भी ठीक है। Don't worry, just leave the commission to us. You're as sweet as ever, Paimon. Well then. Finally, we made it to the last stack. What even are some of these books? A Hilichurl's Guide to Running for Your Life? Do Hilichurls even read? Oh, and Basics of Whopper Flower Cultivation. Who'd grow one of those anyway? बूम ट्रैवलर सुपर डुपर लॉन्ग जंप करता होगा। What's this one? The Little Witch's Dictionary? Huh. ये That तो उसी title's की होगी। kinda suspicious. And कलर भी isn't उसके there a जैसा ही है। circus area? मोना Did you notice it earlier? मोना की है ना ये। कलम मोना है ना यार। ठीक है। Huh. Well, witches always make Paimon think of, you know. या बट उसमें एलिमेंट्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। ओके। ये क्या हुआ? Yoo-hoo! Looking for me? Alice? How did you get in here? You must not have noticed, Paimon. I wasn't the one who barged in at all. When you opened that dictionary, you entered a mage's domain. What? Ugh! Paimon knew that book had issues. Have you ever read the storybook, The Little Witch and the Undying Fire, by any chance? मून पावर बस नॉट क्राई में ही काम करेगा। मून पावर भी है कुछ। क्लिकी मॉम है वो। ये क्लिकी मॉम है। पैमन की वॉइस कब से इतनी अच्छी हो गई? बहुत टाइम बाद सुन रहे ना, इसलिए ऐसी लग रही है। Splendid! That makes things easier to explain. This book was written as a dictionary for that other story. The actual contents of the two aren't related at all, though. That explanation makes things even more confusing. Yeah. Oh dear. Where should I begin? You know the promise the Hexen Circle made to Varka at the Tripartite Conference, yes?
Namely, that in Mondstadt's greatest time of need, the mages would return and lend their aid to the nation. Well, waiting around for danger to descend upon the land isn't exactly our style. Rather than a scenario where we jump in and save the day out of nowhere, it makes more sense to lay the groundwork over time. That's how M put it. Do you know who is Kaylee's father? No, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. Kaylee की mom rich है. Father क्या है फिर? Besides, who knows when such a crisis could occur? It could be in the next life, or even tomorrow. Preparation is crucial. जहाँ से इवेंट पे पड़ा था ये मेरे पास होते ही सब बच्चों का iPad. ये भी ठीक है. iPad दिया बच्चों को. वाह, बहुत अमीर स्कूल है. So, I gathered the mages together to write this dictionary. Of course, it had to be under the guise of being related to that storybook. Otherwise, I would never have been able to get them in one place. और ट्राई में देखना चाहिए कि मम को. ओके, अभी कितनी दूर होगी वो स्टोरी? लगभग 15-20 दिन. Well, we looked into Barbie's scryglass and came up with a series of tasks tailor-made for the people of Mondstadt. They're all in this dictionary. मम्मी क्या लगता है? आवाज से तो लग रही है. Striving toward a common goal, overcoming obstacles alongside trusted companions, becoming better versions of ourselves. That is the best defense against what dangers could lie ahead. Oh, you make it sound like something bad is actually about to happen. Now, I never said that. But still, we are talking about trusted companions here, Paimon. And when we speak of a person who could be considered a friend to all in Mondstadt, I'm afraid the... Wait, the huge book donation? That was just an excuse to get us here, wasn't it? We had to spend ages sorting through them, you know. Oh dear, I never could have imagined you would need to go to such trouble. Uh-huh. Sure you didn't. Well, this is an important book. I couldn't just bring it into Teyvat without taking any precautions. Sohail bhai, welcome to the stream. Hello brother, क्या हाल, कैसे हो? I'm excited to see Alice's husband. वो कहाँ आएगा, कब आएगा? Much better to hide it in plain sight, you see. That's why I donated all those other books to the library. Besides, it's not like this is a bad thing. Just think of it as an excuse to reunite with old friends. And as a favor to your dear Aunt Alice. Okay. If the goal is to help the people of Mondstadt, then we're in. We'll take the dictionary. And the next time we run into our friends, we'll pass your tasks and stuff along, okay? Wonderful. Then I'll let you get to it. Have fun! ये तो कंप्लीट हो गया. ओके, 70 से तो ऊपर है अपनी. तो उसके क्वेस्ट अनलॉक करने के लिए अपने को जरूरत नहीं है उसके क्वेस्ट की अभी. मिस्टीरियस रूम. ये कौन सा मिस्टीरियस रूम ऐड हो गया इसमें लाइब्रेरी में? वो यहाँ मैं पहली बार आया. ठीक है. थोड़ा. Oh, you've got to be kidding me. I just found a fairy tale in one of these books that the old hag told me once. कभी नहीं आएगा. ये भी ठीक है एलिस. मेन्यू में जाके आइकन को सिलेक्ट करो. ओके, वीडियो भाई थोड़ा क्या? She said that she was the one who wrote it and no one else in the whole world knew the story. So, that was just another one of her tall tales, Oh, and you know what else she did? She handed it to me, saying she wanted to give her disciple a gift that was the only one of its kind in the whole world. I cannot believe that woman.
ये मैं आ कहाँ गया पर ये क्या है? कौन सी जगह है ये? हमें दो कैरेक्टर रोड देखने को मिल रही है। सिटलाली। ये क्या है? फ्यूचर बताएगा? बता आज का दिन कैसा है मेरा? एटलीस्ट मैं ये तो बहुत गलत बात है। बहुत नेगेटिव फ्यूचर आया भाई। न्यू एबिस है। मैंने रेडन का पोज यहाँ से लिया था। अच्छा आर्कन क्वेस्ट करो। ये आर्कन क्वेस्ट नहीं है। जाते भाग। नेविगेट तो ही कर रखा है। ओह, ये भी बैठा है। मैं पहली बार देखा ये मिस्टीरियस रूम। अरे भाई आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच। क्यों? वाई? एवरेज से थोड़ी कम है। एक 2 इंच कम है एवरेज से। है वापस अंदर जाने को बोल रहे? नहीं यहाँ पे है कुछ। I still don't believe Albedo would do something like that. Using living people as alchemical test subjects? It's like something out of a novel. मुझे लगा अभी नहीं। बोला कौन है? आपकी क्या हाइट है? Perhaps it's best for me to remain impartial, but I've worked with Albedo before. He's an alchemist, not a sadist. जल्दी जल्दी करो ये टेस्ट कर रहे जल्दी जल्दी। Hey, Jean! Like Jean said, after the verdict, we have time to submit an appeal. And I will do my utmost to convince Albedo to accept. He's been acting strange, and I can't read him for the life of me. But I need you two to start investigating the case. Yes, it's also time for you to get involved. No, we'd like you to launch an investigation of your own. I'll continue working on his defense in the meantime. If you find anything that might help his case, just let me know. मैं हूं ना 5'2", तो 5'2" भी कम थोड़ी है। सही है हाइट, इतनी कम थोड़ी है। नॉर्मल है। वही ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 4 इंच का ही डिफरेंस है। But what if the accusations turn out to be true? क्यों? और देखो क्या बाइक बाइक में पैर टच नहीं होते। क्रूजर बाइक लो। एवेंजर टाइप की या हार्ले टाइप की। जितना बजट बढ़िया उस हिसाब से क्रूजर बाइक में सब टच होगा। आई मीन पैर टच होगी। बाहर ही जाना है ना। हाँ।
जिसमें ऊपर फ्लोर का एक्सेस दे दिया अपने को, पहले नहीं था ये फ्लोर का एक्सेस। ये और फ्लोर है ऊपर, वाह। Wait, Captain Kaya! Surely I can't just. UK gamer, welcome to the stream. Game name Genshin Impact. Bro, do like and subscribe यार. लाइक सब्सक्राइब कर देना। कोमल की हाइट ज्यादा है, आई गेस फ्रिज जितनी। कौन सा छोटा फ्रिज? I have to with high 50 MP now. How does it? So, समझा नहीं मैं। सिक्स का फ्रीज होता है, 6 फीट का फ्रीज होता है, क्या बात कर रहे हो? मतलब अलग अलग साइज आती है, छोटे भी आते हैं, 3-3 फीट वाले भी आते हैं। मैं चला लेता बाइक है। हाँ, बाइक तो मतलब मेरे भी पैर टिक जाता है आराम से, बाइक में कभी दिक्कत नहीं है। These two are here on Jean's orders. She asked them to investigate Albedo's office. Oh, in that case, head on in. So this is Albedo's office. Pretty much exactly how Paimon pictured it. अरे क्रूजर बाइक लो, क्रूजर क्रूजर में सीट नीचे रहती है, आराम से बैठ सकते हो बिल्कुल। वो अपने जैसों के लिए बनी है। All right. I have some work of my own, so I'll leave you to it. Good luck, you two. Right back at ya. Alright, let's see what we can find. Wow, these books are so fancy! Albedo must have gone to great lengths to get them. तुम बोलो किसके लिए था ये क्वेश्चन? Nope, no idea what that means. Not sure if it's too hard for Paimon or too hard for anyone outside this line of work. I guess मैं पाइप का हूँ, so no difference। हाइट को लेकर बेकार लगता है कभी कभी। और रिकॉर्ड चल रहा है 154 सेंटीमीटर। इतनी भी कम नहीं है यार, मतलब एवरेज ठीक ही है। लोगों के 5-6, 5-5 तो ज्यादातर मैंने जितने लोग देखे हैं मेरी हाइट के ही देखे हैं। पर हाँ, छोटे भी देखे बड़े भी देखे, सब तरह के लोग होते, तो इसलिए डजेंट मैटर। डेली कमीशन कलेक्ट करो। ओके, क्या टाइम हो रहा है? 1:30 बजने वाली है, पीछे याद दिलाई। एंड इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे अपन इसको। कमीशन टेलीपोर्ट। वो होगा कुछ कमीशन होगी डेली का, Time to act. मुझे नहीं लगता। Ad Astra Abyssos. I am डेली sorry, कमीशन but नहीं you have हुआ। not yet. एक ही हुआ यार, करने पड़ेंगे। कितना मिनट बचा अपने पास? यहाँ तक तो भागते भागते समय बीत जाएगा। करना क्या पड़ेगा? ठीक है, अपने पास 6 मिनट है, 6 मिनट में 3 कमीशन करना अपने को। अरे नहीं भाई, नहीं 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 नहीं।
मैं गलत टेलीपोर्ट मार दिया क्या? ये भगवान, मैंने कमीशन पे वही नहीं किया, डेली कमीशन पे। मेरा भी दिमाग पता नहीं क्या है। नेविगेट। मैं अपोजिट भाग रहा हूँ, देख रहे हो? दिमाग। 65 में उसका क्या करोगे? चलो बस। क्या करोगे? हेलो। बूंद बूंद से सागर बनता है। 60 60 60 करके 3 दिन की एक विश बन जाती है। 6 मिनट में कुछ नहीं कर सकते, ट्राई तो कर सकते हैं यार। 4 मिनट बचे हैं। 3 क्वेस्ट। माय गॉड, भाई चेस्ट मिल जाते तो चेस्ट से हो जाता, पर चेस्ट भी कहाँ ढूंढूंगा? वाह, टीम भी इतनी शानदार है ना मेरे पास। मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है। Witness the power of Gua. I'm going in. As one with wind and cloud. Laid bare. मिशन कंप्लीट। नेविगेट। टेलीपोर्ट। टेलीपोर्ट। इतना टाइम तक कलेक्ट किया है वो देखो। थैंक यू। Body and mind. Let me weave you a verse. Everybody stand back. This is where you fall. सब F1 फूड डिलीवरी नहीं करना। F1 इंक्रीजिंग डेंजर, इसको कर सकते हैं। नेविगेट पर बहुत दूर है, जल्दी से। 3 मिनट बचे हैं, एक लास्ट कमीशन, उसके बाद कलेक्ट भी करना है। Time to act. Body and mind. I'm going in. Overruled. हो गए कमीशंस, ये मोस्टेड, भागो जल्दी। कोई ना, 40 मिनट उसको मिल गए, पूरे मिल जाएंगे। अभी है, 2 मिनट और है। तुमने सही टाइम पे याद दिलाया। ये ठीक है। Ad Astra Abyssosk. Welcome to the... Thank you for Yay. completing today's commissions. Here is your reward. हो गए। Ad Astra तुमने अब करना बंद कर दिया ना डेली कमीशन? Welcome to the जब भी करते Adventurers हो। Guild. लगता तो नहीं है वैसे। हाँ, भेजे हुए तो है तुमने कैरेक्टर को। अब अपन बात है वो करते हैं। आर्कॉन क्वेस्ट, बैक टू आर्कॉन क्वेस्ट। वेल भाई, which is डेली करती हूँ दिस इन ऑल्सो। क्या बात है, इसको क्या हो रहा है? ये इसे जिटर क्यों मार रही है? मैं फूड डिलीवरी नहीं करना मुझे, थैंक यू। 3 मिनट में 3 वो कर दिए भाई मैंने। गेंशिन शॉर्ट का भी अकाउंट करना पड़ता है। क्या बात कर रही हो? सब सही चल रहा है? उससे बात होती है? कहाँ गायब है आजकल?
मतलब 2 एक महीने से नहीं आया स्ट्रीम पे। उसके पहले एक बार अटेंडेंस दे के गया था। Alright, let's see what we can find. उसको सिग्नल नहीं मिल रहा कि चल ठीक है। बस बात तो नहीं हुई बहुत टाइम से। ओके। तुमने कुछ बोला था ना कि उसके साथ बुली हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब बात बात में यूं ही कुछ क्या हो रहा है? Human transmutation? Is Albedo seriously looking into that? मैंने बस मजाक किया। ओके फिर ठीक है। Ooh, Paimon doesn't want to think about that. बस ये आखिरी बचा। बस हो गई इन्वेस्टिगेशन। उनको ये बच रही है। उसको कौन बोली करेगा, मैं तो इंटरेस्ट, ये भी ठीक है। भरोसा नहीं रहता देखो। इस पे भी करना क्या? नहीं नहीं कर रहा बस। अभी कुछ तो बचा रहा है इन्वेस्टिगेशन में। कैसे Alright, let's see what we can find. वो तो गई इन्वेस्टिगेशन। चारों चीज की कर ली। अच्छा। Wait, it looks like there's a hidden compartment under the desk. The name of the project is blotted out in ink. What could it be? वीडी ये 4 5 दिन बस गेंशिन स्ट्रीम करना। ओके। कह नहीं सकते यार, मतलब कैनिस्टर भाई और विशाल भाई आएंगे तो फिर वो माइनक्राफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं। हाँ पर उनके जाने के बाद लाइक वो चले गए 12 1 बजे, उसके बाद फिर गेंशिन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे वैसे भी वो ओके।
और शायद से निकल के एक इधर है। कि- Huh. What does this mean? Oh, do you think something like... Alright, that seems to be it for this place. We should go tell Jean what we found. हॉगवर्ट्स लीगेसी भी तो है फ्री वाला। मेरे पास पहले भी था, खैर अब भी खेल सकते हैं। पर वो मल्टीप्लेयर है क्या? मल्टीप्लेयर नहीं है ना वो दोनों के साथ तो। BF6 भी फ्री आया था। बैटलफील्ड 6 कब आया था? मैंने नहीं किया गेम, मेरे को नहीं पता चला। Oh, Victor's calling. Let's answer. How's the investigation going? Find any? Oh, we found stuff, all right. Stuff that only makes Albedo look even more suspicious. गेम्स बहुत है, खेलना सिर्फ 4 है आपको। नहीं, मैं बहुत सारे गेम्स खेलूंगा, पर वो अकेले के टाइम में अकेले खेल सकते हैं ना, ऐसा। बाकी टाइम में बाकी टाइम के हिसाब I से खेल। see. So, Albedo's researching something that doesn't help his case, huh? Not promising. We should be grateful Albedo's true identity remains hidden. If it gets out that he's one of Rhindaughter's creations, there'd be no separating him from her past. 2 या 3 वीक्स पहले था, मैंने लिया है। क्या बात कर रहा हूँ? मैं तो पता ही नहीं चला है, नहीं तो मैं भी लेता। पूरा गेम है कि थोड़ा सा वो डेमो टाइप का एक पार्ट है उसका? थोड़ी देर में स्ट्रीम एंड मत करना, ओके? As we both know, Rhindaughter's approach to alchemy and ethics was pure madness, and the evidence you just found, let's just say it could convince even those closest to him of his guilt. Perhaps even you. थोड़ी देर। क्या बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया क्या? 1:30 बजे? Then it comes down to trust. Do you trust Albedo? Yeah, he's our friend. We should keep the faith. And if he really is the culprit, he must have had a reason, right? बैटल रॉयल से, हैं? वही तो पूरा गेम नहीं है ना फिर। फिर पूरा गेम कैसे दे सकते फ्री में? Maybe he's just not allowed to talk about it. Yeah, that must be it. Either way, a fair investigation means coming to a conclusion presented by the facts. Remaining objective has its own value. Remember, none of this is your fault. Just report back with an honest assessment of the facts. Yeah. Well, let's go find Jean and tell her what we learned. 7 आया है फ्री क्लेम करना भी, वाह। कब आया, कहाँ आया, कैसे आया? बना भी है? 6 तक का ही पता है मुझे तो। Wait, that's Miles. What's he doing here? Oh, sorry. I heard voices and wasn't sure if I should check who was inside. It's okay. We're here on Jean's orders. Ah, I see. I'll, leave you to it then. Hold on. You didn't hear what we were saying, did you? Oh, not really. Nothing that made sense anyway. Well, do us a favor and just forget anything you might have heard, okay? Oh, sure. You got it. That map we found in the hidden compartment seems important. We should check out the marked locations. एक तो यहीं कहीं थी ये भी, है ना? तो चलते हैं यहाँ से। ब्लैक ऑप्स 7 सीओडी का, अच्छा फ्री है? सीओडी का ब्लैक ऑप्स 7 कैसे फ्री आ सकता है? अब ये कौन सा भाई?
Laid bare. यही कहीं होना चाहिए। वो तो वही तो जा रहा था मैं। अच्छा, ये दूसरी लोकेशन पे भेज रहा है, मेरे को लगा मिनी मैप में जो वहां दिखाया था वो वाले मैप में भेज रहा है। Baby pack, Only in the welcome grip back. of winter do people truly appreciate the warmth of flames. अभी ऊपर कैसे जाऊं मैं? Rain outlines your fate. Overruled. Everlasting as the moon. Revenue इसको? Let's light it up. मैं भूल गया ये गेम खेलना भाई। I have no idea कैसे खेलते हैं गेम। जी लोकेशन पे तो आ गए अपन, तो करना क्या है यहाँ? जाना कहाँ है? इसको ही जाना है क्या? ये उधर से ट्राई करते हैं। मेरा डीवीएच आने वाला है, सीरीज सही है क्योंकि डीवीएच कौन सा है? एनिमे पर स्किल यूज करने के बाद चेंज अटैक यूज करो। ओके, चार्ज अटैक यूज कर रहे हैं। इसमें यहाँ जाना है पर पहुंच जाएंगे यार, उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे। ये सही जगह टेलीपोर्ट किया, पहले गलत जगह टेलीपोर्ट हो गया था। ऑब्जेक्टिव कहीं तो We should be getting close. Weird. There's a hole, but no. The prosecution's argument is that Albedo used alchemy to destroy the bodies. But this location is different from the other two. Detroit becomes human. Okay. नाम तो सुना ही है मैंने। एक चार्ज अटैक के बाद नॉर्मल अटैक स्पैम करो। इसका फायर वाली का क्या नाम है इसका? Why not fill the hole or smooth out the ground like the other places? अरे हाँ हाँ, नाम भूल जाता हूँ यार मैं। पहले भी थे, मेरे को ये प्रॉब्लम थी नाम भूलने की, बहुत बार भूलूं।
Albedo's case. क्रिएट एंड क्विट क्यूमुलेटिव प्लान। नाटक? कौन सा नाटक? न्यू गेम है। What's wrong? Yeah, not when the charges are so serious. Of course, we'll be there. In the meantime, we should all just stay positive. वीडियो से क्लोज के छोड़ो भाई, मन उदास हो गया। क्यों? क्या हुआ ऐसा? वीकेंड से ज्यादा अच्छा। मेरी चैट्स डिलीट हो रही है बिना कुछ करे। कौन सी चैट डिलीट हो गई? भाई जा रहे हो? तुसी ना जाओ। We should meet up with Jean. It's about time for the second trial. 2 दिन खड़ी रही, उसके बाद बैठ के देखो। चलो इधर ये ना तो इस टाइप का गेम है। अभी मैं आपको 4-6 महीने परेशान नहीं करूंगा। क्यों भाई? कहाँ जा रहे हो? ऐसा क्यों? मल्टीपल गेम में बहुत सुंदर थी। तो वो तो बाइक के लिए होता है ना जनरली। अरे भाई यहाँ पे दिखा दो स्ट्रीम पर वो ये आर्कलाइट। यार गूगल कर लेगी, अगर कहीं से कॉपीराइट वगैरह कुछ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन परसों ही मेरे चैनल पे 5 कॉपीराइट है। वो भी जीटीए की गेम प्ले पे, वो जिस पार्ट में मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। गाड़ी ड्राइव करते हुए जीटीए के पार्ट में कोई कॉपीराइट कैसे मार सकता है? कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। वही तो। Yes, we sent the teeth and the femur bone found at the scene to the church's medical office, and were able to conclude that these are, in fact, human remains. In addition, the investigators were able to identify several Mondstadt citizens who appear to have been missing for quite some time. Forensic analysis of the remains allowed us to pinpoint the age and gender of the deceased. Interestingly, one of the missing individuals matches that profile to a T.
The medical office couldn't spare the personnel, so Miss Rosaria is here to present the results to the court. कॉपीराइट नहीं आता, ऑफिशियल गेम प्ले देखा। नहीं, वो गूगल कर देगी, मैं रिस्क नहीं लूंगा अभी, चैनल खतरे में। Is it reasonable to assume this technique to be alchemical in nature? Thank you for your testimony. The identity of one of the victims is now confirmed. But what about the defendant's motive? Considering what he wrote in the letter, we can deduce that the defendant needed subjects for an alchemy experiment. Who better than individuals whose disappearance would go unnoticed? In other words, he sacrificed the good people of Mondstadt for his own gain. A truly vile act. In addition, another witness has agreed to testify. Miss Donna, if you would. Not good. Wait, Donna from the flower shop? I'm sorry it took so long for me to come forward. But the night Master Diluc saw Mr. Albedo, I was there too. I was camping with a friend and we decided to stop near Dragonspine. I couldn't really get comfortable that night, so around dawn, I decided to go for a walk. And that's when I saw Master Diluc. I thought it might be nice to, chat. So I headed in his direction and then I saw it. Someone at the bottom of the cliff was getting rid of a body. I was terrified the person might see me. Even after I fled, I couldn't shake that fear. And I started to wish I never had a crush on Master Diluc in the first place. If I hadn't wanted to talk to him, I would never have been in that situation. Well, I didn't want to come forward because I was scared. But Miss Hertha convinced me it was the right thing to do. I'm sorry it took me so long. I see. Just stepping forward was brave enough, Miss Donna. Yes. Thank you. The two witnesses corroborate the same sequence of events. That just leaves the question of how the defendant disposed of the bodies. I believe the answer lies in the alchemical technique mentioned in the letter. The defendant is the most accomplished alchemist in Mondstadt. He has the skill, no question. Wait, does she mean... Does this map belong to you? You do realize that's basically an admission of guilt, don't you? The evidence against you is nearly insurmountable. We have witnesses and physical evidence. What could you possibly say in your defense? Ugh, you have some nerve.
Saying that when the evidence is stacked against you? So, what? You're just going to bombard the court with excuse? That won't make the charges against you disappear, Mr. Albedo. Then, there must also have been a body. चलो अब सच्ची वाला यही
Questions there may be, but allow me to point out, there is no evidence to suggest that anyone besides the defendant knew about the third location. And the map was that fact alone makes him the most plausible suspect. Unless Mr. Albedo suddenly plans to deny that the map belongs to him. What? Ha! So you admit it. Let the record reflect that the defendant has confessed to his crimes. Actually, the traveler Amber Bennett and I were with Albedo that day. The Adventurers Guild was holding an event on Dragonspine. After it ended, we all left the area. If the person Albedo is referring to is different from the one we encountered on the mountain, then the altercation must have occurred after we left. This only proves that the defendant is guilty on all counts. Those innocent people, their blood is on your hands. You deny it? After admitting to murder for the whole court to hear? You've clearly lost your mind! So, someone who happens to look exactly like you? It's one thing to look similar, but for the clothes to be the same? What's going on? I don't want to be here anymore. Regardless, the important thing is that you admit to killing someone on Dragonspine. I see. Then, it appears I need to withdraw my testimony. What? Everyone! I brought her! Wait, you... The person who just came in, isn't that Hertha? Who are you? Why do you wear my face? Hello to you too. I see what's going on here. It's all been leading up to this, hasn't it? Your confession. It was all an elaborate stunt to set me up. You want to undermine my credibility? Fine. It doesn't eliminate the mountain of evidence stacked against you. All I want is justice for the people of Mondstadt. Homunculus? Are you trying to insinuate that I'm some kind of... homunculus? Because it looks to me like the artificial one is standing right there. Some kind of imposter you dragged in from Dragonspine. So this is what I look like when I fly off the handle. You know, they say imitation is the best form of flattery, but your impersonation has overstayed its welcome. Master Jean, what are you waiting for? We've known each other for so long. You recognize the real me, don't you?
That means nothing! By that logic, I could just as easily accuse the albedo in this room of being an imposter! How do we know he isn't the fake one? A cold-blooded killer who replaced the real albedo long ago! Then, how about something only the real Hertha would know? The longest scar on my body. The knights who fought alongside me that day should remember where it is. I remember. Let's hear your answer. I'd like to hear Miles' answer first. Huh? You don't know? Or you don't remember? I heard you've been acting strange these days. Disoriented? Confused? You were closer to me than anyone during that battle. And yet you don't remember a thing. Strange indeed. No, my head. It hurts. The scar is right here. Albedo has done a lot of research into beings like you. If you deny it, then show us your arm. Show us your arm. Ugh! Have it your way! Whoa! Come on, let's go! Hey! They're shielding the imposter! There are others trying to get in! Must be more people under her control! Time to get moving, everyone. Whoa! She just leaped across the room! After her! What? How are there monsters in the city? Of course. Where's our first stop? माइक ऑफ है नहीं मैं कुछ बोल नहीं रहा फोकस
Hey, Venti! Shoot, someone's coming. Help me! Please! Someone help me! What's with the freakout? It's just us. Ah, perfect. I can drop the act. Sorry, I thought you were regular citizens. I agree. Although, it's been a while since I dealt with something this big. Oh, it's gonna be pretty exhausting. Haha! Just what I wanted to hear. So, these two know the other's identity then? फंसाना पड़ा कहाँ गए थे Monsters started surging in from Dragonspine during the trial. They soon became agitated, likely in response to the core coming under prep. Still, I never expected those monsters to have become this advanced. Wait, so what about the map? And the missing body? What about the remains Diluc found? Did they belong to one of the victims? The only bodies Albedo destroyed were the monster's mimic forms. Then he buried whatever remained of the victims to put them to rest. तुम दोनों घर घर चलो क्यों चलो फिलोसॉफी फिलोसॉफी खेलते हैं ठीक है हम दोनों घर घर कैसे खेल सकते हैं उसके लिए तो लड़कियां चाहिए ना You saw it for yourself, didn't you? All the people acting strange? Those are the same people who just tried to break into the Knights of Favonius headquarters. Durin's power remained dormant within them until, finally, it surged to the surface and seized control. मैं आपको लॉन्ग प्रूफ करूंगा एंड भाई ऐसा नहीं भाई मैं गेम में फोकस करना ज्यादा पसंद करूंगा अभी क्योंकि मुझे जल्दी से खत्म करना है Wait, so what do we do? We can't go around hurting innocent people. That's why I'm here. It would make me look bad if I just lazed around after promising to help. Yes,
So, if there are little secrets other people shouldn't know, my identity, for example, keep it to yourself, okay? Alright, this should do it. Wind currents? Paimon's never seen this many! नॉट क्रैश शुरू हो गया तो आराम से स्टोरी करना एंजॉय के साथ। कितना टाइम लगेगा इसके बाद? अभी कितना दूर है नॉट क्रैश? ओके, चेड़ी के साथ खेला तो बस अनबायस था। ये भी ठीक है। All good. We have enough manpower to provide support. Requesting assistance at the side gate. Heading over now. Whoa! It's long-distance wind communication! How is that even possible? Actually, if you face away from the current and whisper like this, no one can hear you. No wonder you're crouching down there like you have something to hide. अब मेरे को लग रही है भूख। थोड़ा थोड़ा सा ही बचा है। ओके, पर मेरे को भूख लग रही है, मैं जाऊंगा कुछ खाने। ये खत्म होते ही। You didn't have to broadcast that. Huh? That voice? Venti? Is that you? Oops. Oh, you know, just a wandering bard calling for help. Thank goodness the Traveler, Paimon, and Albedo found me. Got me out of a tough spot. Thanks, friend. May the Animo Archon protect you. I've got things covered here. I don't like being in the middle like this, especially on a bridge. थोड़ा समझ के चलो, इससे बोर नहीं लगेगा। अब बोर तो मैं अब भी नहीं हो रहा। मैं ये गेम में स्टोरी के लिए ही खेलता था मैं ज्यादा। Oh, look who it is. Get back! Phew. That was a close one. I suppose thanks are in order, Master Diluc. I appreciate the help. नहीं। No need. I didn't intervene to save you. It was for my own convenience. You were in my way. Oh? Well, let me get out of your hair then. I suppose we could work together, but you would just melt my ice anyway. Suit yourself. All right, tell me. When did you notice something was off? नॉट क्राइम में मजा ही मजा। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है उसमें? The first trial. Ah, because of the fake Hertha? No, because of you. Me? What did I do? My defense wasn't passionate enough? No, you weren't nervous enough. Tell me then, Master Diluc, when do you think I actually get nervous? I suppose we'll see, won't we? Monsters incoming. On second thought, best not to think about it. Verdict is...
डॉज किससे करते थे मैं भूल गया। This moment will be frozen in time. Time for retribution! Freeze! Don't get frostbite. नहीं, No excuse for defeat. मरना नहीं था। अब इसको कैसे मारूंगा? मैं तो खाना खाने जा रहा था, मेरा वो खाना वाला बैग ही गायब हो गया। फिजिकल अटैक से ही मारना पड़ेगा अब तो। Cool it. मैं उससे कर सकता हूँ ना बैग। हाँ, रिवाइव 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 रिवाइव। आई गेस आइस में आइस मार रहे हो अब शायद, वही तो। इसमें डॉज नहीं होता। तो ये पी के कैरेक्टर लोग क्रेजी है। मैं अब भूल चुका हूँ, ये गेम बहुत टाइम हो चुका है मुझे खेले हुए। ये यूज इस पे कंफर्म हीलिंग के लिए करते हैं। कहाँ गया है हीलिंग के लिए? मैंने कुछ तो बना रखे थे। ये ठीक है। ये कंफर्म कंफर्म। Don't push your luck. This moment will be frozen in time. Burn! ये They're over there! Dilu, Kaya! ये छोड़ दो, मेरे साथ गेम खेलो। कौन सा? If you had time to make it out here, I'm guessing the other areas are secure. What? We can't be here because we care? Maintaining control over the main road means maintaining control over the battle as a whole. You made the right choice. So what's the status over here? All under control. Don't worry. My trusty civilian volunteer and I have this area covered. We don't have to bring that up. Good luck. कुछ नहीं होता है। Believe me, he's had his suspicions since the first trial. I suppose it just didn't feel right to believe that someone who helped me in the past could be a cold-blooded killer. ये भी ठीक है। Aw, that's so sweet. Of course. Stay safe. Let the show begin.
Thank you so much, Miss Barbara. Things are still quite chaotic outside. It's best if you all remain inside the... इसकी भी आवाज हटा दी। Don't worry, Miss Barbara. I'll try not to put myself in harm's way. I can help with the logistics from the back. Of course. Thank you, Miss Rosaria. क्वेस्ट होने के बाद आगे कि यार तुम क्वेस्ट कल करना। अब मैं तो वैसे भी जा ही रहा हूँ। They're here! Prepare for battle! ये बहन बहन है शायद, है? समझा नहीं। On guard, everyone! Incoming monsters at 11 o'clock! Looks like we've got 25 hilly churls, 2 blazing axe mida churls, and a bunch of different slimes. Prepare elemental countermeasures! Roger that. Go, go, Baron Bunny! Get him! अच्छा मेरे पास दूसरा कैरेक्टर भी है, मैं तो भूल ही गया। Neutralizing threats! You had your chance! Leave the wounded to me! Let it rain! All units are now in position. जीने ने जो भी है वो, हाँ। Hertha! Ah, jeez, your voice scared me just now. What? Still caught up in the imposter incident? I thought you knew about the plan. Well, after you up and disappeared one day, all Master Jean told me was that you'd be gone for a while on an important mission, and that it'd be better if people thought you were dead. And then, what do you know? Someone who looks exactly like you appears out of nowhere 2 days later.
If Master Jean hadn't told me about your mission, I would have fallen for it hook, line, and... Yeah, that's quite a scary thought. I get chills just thinking about it. A monster replacing someone close to you, and you're none the wiser. Albedo! Are you okay? The trial wasn't too hard on you, was it? I'm sorry I couldn't be there. I was so worried. Same here. I thought it was all real at one point. I was in complete shock. That sounds like you, all right. She's like an impenetrable wall, that one. You're not getting a secret out of her. Yeah, for sure. She's someone you can really count on. Wait, so how did you decide Hertha should disappear again? After all this fighting, I can't seem to get it straight. Ah, so that explains the rumor that someone had fallen during a mission. Of course, it didn't take long for that to get resolved. वो पाइमोन है क्यों? When did that happen? Over 6 months ago. Whoa, so this has been a long time in the making. Internal information even reached Durin and his monsters. There's an informant among our ranks. Honestly, this whole situation almost gave Paimon a heart attack. All those awful accusations in the first trial, and you couldn't even defend yourself! Yeah, thank goodness we were able to back her into a corner. Aw, that means a lot. Wait, was that Eula just now? Let's go to the side gate to check it out. I guess अब मुझे बंद करना चाहिए आज के लिए बहुत हो गया टेक्निकली एवरी पर्सन ओके
कैसे क्यों? ये भी थक गई, देखो बैठ गई। अपन चलो ठीक है, ओके गाइस, जो जो भी स्ट्रीम देख रहे हैं, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अपन अगली स्ट्रीम पे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। 2:30 बज गई, 2:40। सो गुड नाइट, सी या, टेक केयर।